we are discussing about the Kent's 12 observation. It's very important for all exams, aiapget exam or government, any government exam and NHM exams, all exams. In this 1 to 2 questions is surely asked, so you have to learn by heart and for with understanding. So we are discussing about the total Kent's 12 observation. Here we are explaining some tricks regarding the to memorize the Kent's 12 observation. First, 1 to 4 observation, that is the aggravation observation, and 5 to 7, that is the amelioration, and 8th is the idiosyncrasy, 9th is the drug proving, 10, 11 and 12, that is the now. Means N means new symptom, O means old symptom, W means wrong direction. Now we have to learn, that is the first observation, that is the prolonged aggravation followed by the final decline of the patient. In this, antisoric is the deep, potency is high, destruction is totally established, and case in this observation case is incurable and prognosis is very bad. If prognosis is bad, then what to do? That we have to antidote. Remarks that don't give a deep remedy when organic disease are present. In this term, organic disease is present, then deep acting remedy should not be given. Incurable and doubtful cases give 30 or 200 potencies. And the second observation is that prolonged aggravation but final and slow improvement. In this, the prognosis is good, but interference, the case borderline was at verge of becoming incurable, and there was marked tissue changes. Some marked tissue changes is there, and in this we have to give remedy in more than 30 potency. Now we have to discuss third observation, that is the aggravation is quick, short and stronger with rapid improvement of the patient. In this, the prognosis is very good, remedy is correct and reaction is vigorous, improvement marked and no structural changes. तो हम क्या करेंगे इसमें? Not to disturb the action of the medicines, and this type of action is very reassuring. This type of the action is very reassuring. Now we have to discuss the fourth observation, that is the no aggravation with recovery of the patient. In this, the prognosis is good in acute cases but doubtful in the chronic cases. Interference in these cases, selection of the remedy dose potencies are suitable and no pathological changes present. The disease is in fundamental functional level. And isme what to do? It's best seen in acute cases. Recovery of patient is seen. Select deeper medicines in chronic disease. Fifth, amelioration comes first and aggravation comes afterwards. In this, the prognosis is unfavorable, interference remedy correct, reaction vigorous, improvement marked, no structural changes. What to do? Not to disturb the action of the medicine. Now we have to discuss the sixth observation, that is the too short relief of the symptoms. Prognosis is very poor. Interference in this cases where there is the short relief of the symptoms, the case should be re-examined and obstacles to cure should be find out. जिसमें हमें इस केस में कैसा है, जहाँ पे शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम होगा तो वहाँ पे हम केस को है ना फिर से री एग्जामिन करेंगे और ऑब्स्टेकल्स को जो होगा ना क्योर करेंगे, शुड बी फाउंड आउट. बट इफ़ इट इज़ सीन इन क्रोनिक केसेस, अगर हमें ये क्रोनिक केसेस में देखने को मिलेगा तो इट इंडिकेट दैट द पैथोलॉजिकल चेंजेस इज प्रेजेंट एंड द प्रोग्नोसिस इज बैड. तो हम इसमें क्या करेंगे? रिपीट द रेमेडी मोर फ्रीक्वेंटली इन एक्यूट केसेस, और हम इसमें रिपीट करेंगे रेमेडी को मोर फ्रीक्वेंटली इन एक्यूट केसेस. फिर आता है सेवेंथ ऑब्जर्वेशन, डेट इज़ द फुल टाइम एम्यूलेशन येट नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द सिम्टम, डेट इज़ द पेलिएशन. प्रोग्नोसिस पुअर, patient cannot be cured completely, he cannot be ameliorated to a certain extent. In this, the interference example, patients with one kidney
can only improve to a certain degree. The symptoms will be ameliorated from time to time with remedies, but beyond that it is not possible. तो हम इसमें क्या करेंगे, द पेशेंट कैन ओनली बी पेलिएटेड. इस केस में हम पेशेंट को सिर्फ पेलिएट कर सकते हैं, टोटली क्योर नहीं कर सकेंगे. फिर बाद में हम 8th ऑब्जर्वेशन में क्या है, सम पेशेंट्स प्रूव एवरी मेडिसिन व्हाट दे गेट, मीन्स इडियोसिंक्रेटी. वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग द इडियोसिंक्रेसी इन दिस ऑब्जर्वेशन. That is the prognosis. Oversensitive patients are incurable. Interference idiosyncratic patient, what to do? Prescribe them low moderate potencies. और रिमार्क्स में सच ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स, जो ओवर सेंसिटिव पेशेंट होंगे ना कोई वो बहुत गुड प्रूवर्स कहलाते हैं. फिर आता है हमारा 9th ऑब्जर्वेशन, एक्शन ऑफ द मेडिसिन अपॉन द प्रूवर्स, दैट इज द ड्रग प्रूविंग. Prognosis proving always benefits healthy provers if they are properly conductions. Interference, these symptoms will not very commonly appear during the proving if they do not the change in them. और उसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व केयरफुली द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल अबाउट टू बिकम ए प्रूवर, और राइट करेंगे, राइट दिस डाउन एंड सब्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द प्रूविंग. फिर 10th ऑब्जर्वेशन, न्यू सिम्टम्स अपियर. प्रोग्नोसिस उसका कैसा होगा, अनफेवरेबल होगा. इंटरफेरेंस मेडिसिन रॉन्ग होगी. और हम इसमें क्या करेंगे, इफ़ न्यू सिम्टम्स आर नॉट सीरियस इट इज़ वाइज टू लेट देम पास ऑफ. बट दे आर सीरियस, देन रीकेस, अगर वो सीरियस है देन रीकेस टेकिंग इज एडवाइज्ड एंड यूज ओल्ड एंड न्यू सिम्टम्स टू डेट द मेडिसिन्स. फिर 11th ऑब्जर्वेशन हम डिस्कस करेंगे, व्हेन ओल्ड सिम्टम्स रीअपियर, दैट इज द हैरिंग्स लॉ. प्रोग्नोसिस वेरी गुड, इंटरफेरेंस मेडिसिन करेक्ट, disease curable, symptoms are disappeared in the reverse order of their appearance. What to do? Medicines must be let done. If old symptoms stay, then a repetition of the, अगर old symptom है वहाँ पे तो repetition of the dose is often necessary. फिर 12th ऑब्जर्वेशन, सिम्टम्स टेक रॉन्ग डायरेक्शन, प्रोग्नोसिस पुअर. इंटरफेरेंस में क्या आएगा, मेडिसिन रॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे, एंटीडोट करेंगे इमीडिएटली. फिर रिमार्क्स में, देयर इज अ ग्रेट डेंजर इन सिलेक्टिंग ए रेमेडी बेस्ड इन एक्सटर्नल सिम्टम अलोन, इग्नोरिंग ऑल द सिम्टम्स एंड जनरल स्टेट ऑफ द पेशेंट. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें. Thank you, friends.